past 2 days, we've explored the basics and advanced features of Python. Today, we'll look at how this all comes together in a project. Now, I'd like to invite our organizers and coordinators, Roop, Deepthi Subha, Vineet, Vivek, and Suhaib to walk you through a simple but interesting Python project. Thank you. Hello, I am audible to all of you guys. Please respond yes or no. Okay. So guys, do you have any query in previous topics? Please respond yes or no. Okay. So now let's start this session. Good afternoon everyone. I am Vivek Kaur Gupta from CSC second year. Imagine if you could know the weather of any city in just one click. Sound cool, right? That exactly what our Python weather app does. Just type a city name, hit the button, and boom, you will get live weather details like temperature, humidity, wind speed, and more. So let's see our project first. Just wait a second, I will see my screen first. So this is the interface of our weather app. This interface is built using a Python library called Tkinter. Here in the left top corner, we have title of our weather app. Here here we also have a entry box which is used to enter the name of the city or place the user want to get the live weather conditions. Here we also have a search weather button. When we click it, it will send a request to the server through an API. So let's enter any city name like Durgapur. When we click this button, this will show the live weather condition of Durgapur. Let's see. So look at here. In our interface, we will see the live weather condition of Durgapur with different parameters like temperature, cloud, humidity, wind speed. And at the end, we also see a current date and time here. Here, we use a Python module called date and time, which will help to fetch current date and time from the from Python library. So this is the interface. Here we also add a scroll bar functionality in our interface, which is used to see a 4-day forecast of the city. Here we see we have to show in our interface we have 4-day forecast of Durgapur. So this is how our weather app look like. Now I will try to explain you the working behind this project. So wait a second, I will switch my screen. Okay. So now I'll try to explain you the working behind this project. First of all, tell me what is weather? I hope all you guys know what is weather. Weather is nothing but a day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to element like humidity, temperature, wind speed, etc. So now we will understand what is weather. So here a question comes in our mind that why we need a weather app. So there are numerous reasons why we need a weather app. Like we can plan our day according to the weather conditions. Also, weather app warns us about dangerous weather conditions like storm, flood, etc. And the last but not the least, weather app is very useful for farmers so that they can plan our crop cycle according to the weather conditions. So these are the benefits of having a weather app. Then again, a question comes in our mind that how weather app get these data and also shows the future weather. Here, there are 4 steps by which weather forecasting done. Step 1. Data collection. So, the weather forecasting starts with collecting massive amounts of data from all over the earth. This data comes from satellite, weather stations, weather balloons, etc. for 24 into 7. Now step 2. Once all the data is collected,
The data is fed into supercomputers and weather models to predict what likely to be happen in next few hours or days. Now step 3, forecast generation. Based on model outputs, meteorologists generate weather forecast hour by hour or weekly for temperature, wind, humidity, pressure, etc. Now the fourth and the final step is sharing the data. Finally, the forecast data is shared with weather websites like weather.com, OpenWeatherMap, and etc. Also, this data is shared with mobile applications and government portals. So, these are the four steps through which we can see a current weather condition of particular place or city. Now, again, a question comes in our mind that if we want to build our own weather app, then we need to launch our own satellite or build our own weather app, weather stations. No, right? Then how we will get these data for our weather app? Here, the concept of API comes. Now, what is API? API stands for Application Programming Interface. It is a set of rules or protocols that allow different software applications to communicate with each other. API helps to fetch data from the server. So, this is how the concept of API works. Now, let's move on to the next concept. Now, we are going to understand how our app works and how our web app fetch data from the server. So, so let's understand this concept through our weather app. So just a minute, I will show my screen first. Wait a second. Okay. Hmm. So let understand this concept through our weather app. तो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ हमारे ये हमारा वेदर ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा ऐप बैकएंड में काम कैसे करता है, मतलब ये सर्वर से डाटा फेच कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग पास एक एंट्री बॉक्स है। तो जैसे ही लेट से अगर हम लोग किसी सिटी का नाम इंटर करते हैं, यहाँ लेट से दुर्गापुर, ओ सॉरी, लेट से दुर्गापुर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी सिटी का नाम इंटर करते हैं, तो ये जो ऐप है वो सिंपली इसको एक इवेंट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग जब हम सर्च वेदर बटन को क्लिक करते हैं, तो होता क्या है, बैकएंड में एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है। हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रेस्पॉन्स। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अरे, हेलो, आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ here, if we enter any city name and when we click this button, this will send a request in HTTPS format. I will already tell you what is HTTPS. Now, अब होता क्या है, जैसे ही HTTPS रिक्वेस्ट जनरेट होता है, ये सिंपली API के पास जाता है। अब API क्या करता है, सिंपली वो जो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है उसको प्रोसेस करता है और सिंपली क्या करता है, वो सर्वर के पास लेके जाता है। यहाँ पर हम लोग का सर्वर कौन है, यहाँ पर हम लोग का सर्वर है ओपन वेदर मैप, जो कि बेसिकली सारा डाटा को स्टोर करके रखा है। ठीक है, जैसे ही एपीआई वो हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको सर्वर के पास लेके जाता है,
तो सर्वर प्रोसेस करता है कि ऐप ऐप जो है वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो चेक करता है कि उसके डाटाबेस में वो जो रिक्वेस्ट किया है वो डाटा है कि नहीं। अगर उसके डाटाबेस में वो डाटा प्रेजेंट रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पर दुर्गापुर का वेदर कंडीशन के बारे में रिक्वेस्ट किए हैं, तो हम लोग का ओपन वेदर मैप में जो सर्वर है उसमें अगर वो डाटा होगा तो सिंपली क्या करेगा, वो एपीआई को दे देगा। ठीक है। बट दिक्कत यहाँ ये है कि एपीआई को जो डाटा देता है सर्वर, वो जेसन फॉर्मेट में होता है। व्हाट इज जेसन? जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, विच इज बेसिकली अ नेस्टेड डिक्शनरी, जो कि हम लोग कोडिंग सेक्शन में देखेंगे। होता क्या है फिर, एपीआई वो डाटा लेके सिंपली ऐप के पास आ जाता है। अब ऐप क्या करता है, ऐप सिंपली जो डाटा उसको इंटरफेस में शो कराना है वो सिंपली वो जेसन फॉर्मेट से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ दुर्गापुर का सिटी नेम इंटर करके जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग को ये करंट वेदर शो कर रहा है दुर्गापुर का। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। एक सेकेंड। हम्म। तो इसको इस इमेज से समझते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग जो है, जो दुर्गापुर जो सिटी को नेम इंटर किए हैं इंटरफेस पे, तो हम लोग यहाँ क्लाइंट है। क्लाइंट क्या होता है, हमारा बैकएंड में क्या होता है, ऐप एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, जो कि अभी हम बताएं HTTPS फॉर्मेट में। वो क्या होता है फिर, वो ऐप के पास जाता है, ऐप वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फिर वो रिक्वेस्ट को कहाँ लेके जाता है, सर्वर के पास। यहाँ हम लोग का सर्वर कौन है, weather.com, वेदर ओपन वेदर मैप, जो सर्वर है जिसके पास सारा डाटा स्टोर है। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो अपने डाटाबेस में चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट है वो उसके डाटाबेस में है कि नहीं। वो होगा तो वो सिंपली क्या करेगा, वो डाटा को फॉरवर्ड कर देगा एपीआई को, और एपीआई क्या करेगा, उसको फिर वापस हमारे ऐप ऐप के पास वापस लेके आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा डाटा कैसे शो होता है हमारे इंटरफेस पे। तो इसी तरीका से हम लोग का ऐप जो है वो बैकएंड में काम करता है। सो that's all from my side. I hope you will understand all the concept well. However, if you have any query regarding this project, feel free to ask in chat box. Do you have any query, guys? हम्म। तो जैसे ही हम लोग एक किसी, हाँ, तो यह व्हाट हैपन इफ यू इंटर, एक सेकेंड। सो व्हाट हैपन इफ यू इंटर रॉन्ग सिटी नेम। तो जैसे ही हम लोग कोई रॉन्ग सिटी नेम इंटर करेंगे, तो रिस्पॉन्स जनरेट होकर एपीआई के पास जाएगा, और एपीआई सिंपली रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर देगा, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं कोडिंग सेक्शन में। तो ऐसे ही होता है, वो एरर शो करेगा। लेट्स आई विल शो यू, wait a second, I will show you what happen if you enter a wrong city name. Here, if you enter a wrong city name, we will show a pop-up. Let's say if you enter this city name, which is not exist, then we show a pop-up error. Here you see city Durgar not found. Why? This is come under error handling in Python, which we'll later see in coding section. So you understand what I'm trying to say? Okay. Oh, now have you any query? Okay. So now I would like to hand over this session to our respected host, Soeb. Thank you. Thank you, Vivek. So, good afternoon, everyone. I am Suhaib from second year. So, now we are going to discuss about how the output of project will actually work from backend. So, wait, let me share my screen first.
I think Shoaib has some network issues. He'll be back soon. Please wait. I think Shoaib have some network issues for which he can't attend the session anymore. So let me take the lead. Good afternoon, everyone. So now we will start our development. So let me share my screen once again. So as we all know, we are using Tkinter for our development. So good afternoon, everyone. So now we are going to start our development. So as we know, we are using Tkinter for our development. So first of all, our step will be to install the Tkinter library in our machines. So for that, we need to open VS Code and we will type pip install tk. As you can see right now, my device is showing requirement already satisfied since I have already installed it in my device. So all of you have done the all of you have I think you can install it. Please, okay. So after installing, we will start our coding part. So from here, we will import all the necessary resources for our project. So here we will write tk from tkinter import star from tkinter import message box and import requests, and finally import JSON.
So so let me explain what are the functions of this each imports. So here we're using since you are using Tkinter, so you will import all the necessary library necessary resources from Tkinter. For that we are using from Tkinter import star. Then in the next line, then in the next line we are writing from Tkinter import message box, which is, and the message box is finally responsible. Uh, are you guys following up? If you are following up, then please give me a show some response. Okay, so now you are. So are you guys following up? Now, so start your coding with me. So as you can see, as we can see that we have wrote these imports, and we are importing on necessary resources from the Tkinter. So in the first line we have done from Tkinter import star, which means that we are importing all the classes and functions that are available in the or Tkinter GUI library. And in from second line from Tkinter import message box, we are importing all the modules to display in the alert box. As you have seen in the earlier session, that when we enter a wrong uh, when we enter a wrong place's name, the dialog box which comes up as a pop-up, that is made by message box. And in the import request part, this request in module will handle all the API calls, and finally the JSON part will we use to display all the JSON all the API data that is fetched from the API server in the form of JSON format. So now our second step will be to create a window, create a window box. So uh, app is equal, so we will write app is equal to tk. Okay. Then app dot title. Here we will write weather app. Then app dot geometry. Here which is used to set the dimension of our project. So you can input any size you want. So for example, if you do 500 x 500, it will take 500 pixels and make it a square. And you here in app.configure, we will set the background color. For example, bg is equal to for the in our case we will write the hex code f8, which is the color code for sky blue. And then finally we will do app dot main loop. So, and if we run the code, as you can see, here's our project window, and we will do our further specifications in this part. So you can adjust the size of a window as much as any way you like. So, for example, let me change it to, for example, five times to 700, and press S and save the project. And then if I run it, see, now the dimension of the project window has changed. So for this lecture session, let's keep it 700 by 700. And then we are going to create our generate our API key from the OpenWeather site. So on Chrome,
Yeah, here we will go to this site, and as you can see, I have already logged in. So everybody kindly log in the sign up in this sign in this site with your Gmail ID, and after signing up, you will automatically this site will automatically provide you a default API key, which we will use in our project. So uh, after you are done generating your API key, please let me know in the message box. Okay, so I have done. So carry on. Are you guys done? Hello guys, are you done? Okay. I think we have given you enough time to generate your API key. So let's continue our project. So from here we will copy our API key and we will create a variable here. And we will create a variable here that will store our API key value. And then we will start uh, to create a search box. For that we will write city text is equal to string var then entry app text variable is equal to city text font Arial, and the font size will be 14. Then the width of the font will be 30. Dot back, and we will add a padding in the y-axis of 10. And then we will add a button. Then we will add a button app, and the button will have a text.
comma 12 lambda okay, then we will use back. So the string where holds the city's name as we that will be entered by the user, and the entry part will create the entry input box, and the button as we have made it will trigger the search function that we will soon define in the. So now if we run the project, as you can see, here is our search box, and hmm. So after this, we will describe our location part. Location, we will define a label for the location. Uh, for this, we will use the label. Then font equal to Arial, and then the font size will be 12, and the background color will be same as earlier, the sky blue that we have done in the window section.
Then we'll do location label dot pack, and then the uh, temp label is equal to label font Arial, then PG will be also same. Then temp label is equal to pack. Then for the weather, label app font equal to the Arial 12, BG same, then same with a pack. Then we'll do humidity level font equal to Arial, and font size will be 12, and BG background color will be here same here as well. And then humidity level pack, and wind, and for the wind level label font 12, and background wind level pack, then date time. Oh, I'm sorry. Then for the final part, we'll do label app text equal to 4-day forecast, and font, font will be 14, and the background color will be same, and then we will add a padding, a packet, and add a padding of 10. And
And now if we run the project, you will see there is a label known as 4-day forecast, and the labels we have defined so far will be the you can you will find it later in the session after you define the search function. And so you guys are following up. Please respond. And others? Okay, fine. So now we will add a scrollable frame for the 4-day history of our search. So we will make a forecast frame variable. Uh, the background will be same. And forecast. We will add a padding 10 in x-axis and in the y-axis, and then we will do fill equal to both and expand is equal to true. So do you guys have any queries so far? हेलो। हाँ बोलो। हाँ भैया, वहाँ पे जो एपीआई की होगा वो मतलब डबल कोटेशन में होगा ना, यूजर एपीआई, या फिर नॉर्मल? वो ऑप्शनल है, तुम डबल भी डाल सकते हो, सिंगल भी डाल सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए काम नहीं कर रहा। और कुछ? और कुछ? अच्छा, सो अभी तक हमने जो पार्ट डिस्क्राइब किया है, जो लेबल वाला पार्ट, यहाँ पे जो दिखाया गया है, जो जैसे यहाँ पे वो लोकेशन लेवल, टेम्परेचर लेवल, वेदर लेवल, ह्यूमिडिटी लेवल, विंड लेवल या डेट टाइम लेवल, ये जो भी है लेवल इन द सेंस कि मान लो कि वो जब हम लोग सर्च कर रहे हैं ना, सर्च करने के बाद जो नीचे टेक्स्ट आ रहा होता है वो वही होता है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ आएगा वो रीजन, वही रीजन है। मान लो कि फॉर एग्जांपल इसको हमने टाइप कर लिया इतना तक, तो अभी अब अगर इसको रन, और ये वाला नहीं, एक मिनट, लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट फाइल। तो इस प्रोजेक्ट फाइल में मान लो कि मैंने यहाँ पे दुर्गापुर सर्च किया, दुर्गापुर सर्च करके यहाँ पे जो किया, तो यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो लेबल वाला पार्ट, ये इसी पार्ट को डिफाइन कर रहा है। वो जो यहाँ पे लोकेशन वाला पार्ट ये दुर्गापुर डॉट आई कर रहा है, टेम्परेचर वाला पार्ट यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि हम बाद में डिफाइन करेंगे। ये वेदर वाला पार्ट, बेसिकली ये वाला पार्ट है लेबल, और ये नीचे वाला पार्ट है कैनवस, जहाँ पे 4 दिन का डेट, 4 दिन का फोरकास्ट वाला पार्ट पूरा आ रहा है।
यहाँ पे 4 दिन। सो अभी के लिए प्रोजेक्ट बंद करते हैं, फिर लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने किया फोरकास्ट तक, और फोरकास्ट के बाद हम हम लोग बनाएंगे इसका फोरकास्ट वाला कैनवस। कैनवस के लिए हम लोग करेंगे कैनवस कैनवस फोरकास्ट फ्रेम। बैकग्राउंड हम इसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं लाइट स्काई ब्लू के थोड़ा लाइटर शेड, जो कि उसका कलर कोड है DAE B6F1, and the highlight thickness will be 0. Then scroll bar, forecast frame vertical। तो यहाँ पे हम लोग फोरकास्ट का वो जो स्क्रोल बार है उसका हम लोग ओरिएंटेशन सेट कर रहे हैं कि वो वाई व्यू में, वाई एक्सिस में हो जाए, जैसे ये वाला स्क्रोल बार है। और उसके बाद फ्रेम फ्रेम कैनवस। कैनवस का बैकग्राउंड भी हम लोग सेम रखेंगे। तो इतना तक हमने किया कि कैनवस डिफाइन करेंगे। तो अभी अगर हम लोग रन करेंगे इसको, तो एरर आ रहा है। एक मिनट, ओह सॉरी। अभी अगर हम इसको रन करेंगे, भैया आई थिंक वो फ्रेम वाला स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ सॉरी। हाँ थैंक यू। हाँ तो जैसे अब जैसे रन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये इनपुट वाला सीन्स यहाँ पे कुछ है नहीं अभी, तो यहाँ पे काम काम कर रहा है, ये एरर दिखा रहा है। तो उसके बाद हम लोग फोरकास्ट फोरकास्ट के लिए फंक्शन वगैरह डिफाइन करेंगे। उससे पहले एक फाइनल फोरकास्ट का काम है, इनर रेन डॉट बाइंड कॉन्फ़िग लैम्डा कैनवास कॉन्फ़िगर स्क्रोल रीजन। बेसिकली इतना जितना डाटा होगा हम लोग के पास, जो जितना डाटा होगा स्क्रोल का फ्रेम, उस हिसाब से स्क्रोल का डायमेंशन और साइज उसी हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। इसमें इसके बाद हम लोग एक कैनवास का विंडो क्रिएट करेंगे।
is equal to configure by scrolls over set। और तो इस पार्ट में हम लोग ये सेट कर रहे हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली कैनवस का लोकेशन होगा। तो जैसे हमने यहाँ किया कि क्रिएट विंडो, विंडो फोरकास्ट इनर, अंदर एक छोटा फ्रेम बनेगा और वो नॉर्थ वेस्ट के साइड में एंकर रहेगा। तो अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो एज तो आप ये इस पर भी टाइप कर सकते हैं। इन सब लोगों का फंक्शन अभी डिफाइंड नहीं है, तो एटलीस्ट ये काम कर रहा है। तो सॉरी, एक मिनट, कैनवस को कनेक्ट करना तो भूल ही गया था। कैनवस डॉट पैक साइड इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू लेफ्ट both span is equal to true। scroll bar pack side is equal to right a is equal to y axis। स्क्रॉल बार। तो इसके बाद हम लोग फाइनली अपना प्रोजेक्ट का फंक्शंस वगैरह डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग एक, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादातर डाटा केल्विन में आएगा तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोगों का एपीआई से डाटा निकालने के लिए फंक्शन जो होगा हाँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। शांतन, मुझे एरर दिखा रहा है थर्ड लाइन में कि रिक्वेस्ट कोई मॉड्यूल नहीं है। हाँ, तुमको शायद फिर एरर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल में आ रहा है। क्या रिक्वेस्ट मॉड्यूल में आ रहा है? तो शायद हाँ हाँ इंस्टॉल करना हाँ। पड़ेगा। एक काम करो, कोई पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करके देखो कमांड लाइन में। ओके ओके, एक सेकंड। एक और बाकी को क्या दिक्कत है?
और बाकियों के क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? एंटन और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? भैया वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट एक और दिखा रहा है प्रॉब्लम कि एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है कि str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट tk। ये मेरा 14th लाइन में हो रहा है, तो बटन वाला जो चीज आपने करा था। एक मिनट तो अपना स्क्रीन शेयर करो, हाँ हाँ, एरर दिखाओ। एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। हाँ हेलो, am I हाँ visible? दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए ये वाला हो रहा है। मेरा वैसे कोड अभी तक लास्ट लाइन में थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्या वो कंप्लीट करके फिर चलाओ? जैसे मैंने यहाँ तक बनाया। एक मिनट, तो सर्च वाला भी पार्ट डिफाइन तो नहीं किया है, वो ऐसे दिखाता रहेगा। अभी तो सर्च ओ का अच्छा फंक्शन अच्छा। डिफाइन नहीं किया है। अच्छा तो फिर भैया क्या करूँ ये इसके बाद? रिक्वेस्ट किया, मैसेज बॉक्स ये सब। टीके इंटर इंस्टॉल किया था क्या तुम? हाँ हाँ वो किया था। पिप इंस्टॉल ठीक है, तो फिर अभी डिफाइन नहीं किया है तो ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये, ये वाला लेट्स बोल रहे हैं कंटिन्यू। ना pip इंस्टॉल हाँ हाँ tk? हाँ हाँ हाँ, ये किया करके था देखो। भैया। डिफॉल्ट इज नॉट राइटेबल, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, शायद इंस्टॉल्ड है मेरा। इंस्टॉल्ड हो गया, तो इंस्टॉल्ड हो गया है। हम्म, वही अभी ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, ये अभी अच्छा इसीलिए ये दिखा रहा है। सर्च वाला अच्छा फंक्शन अच्छा तो डिफाइन नहीं किया है। अच्छा अच्छा, तो फिर उस वो करने के बाद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है, मैं फिर कोड कंप्लीट करके उसके बाद देखता हूँ, अगर एरर होता है तो बोल दूंगा। ठीक है ठीक है। हाँ, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था। ये एपीआई सर्च वाला फंक्शन फोरकास्ट में जो होगा, गेट फोरकास्ट। तो गेट फोरकास्ट लोकेशन, यहाँ पे हम लोग डालेंगे URL इक्वल टू एफ HTTP कोलन API डॉट openweathermap.org स्लैश डेटा स्लैश 2.5 स्लैश फोरकास्ट
question mark q is equal to bracket में location and app ID is equal to user ID. Then response is equal to request dot get URL data is equal to response dot json. के बाद हम लोग एक कंडीशन चलाएंगे if data cod not equal to 200, then return none. और अगर ट्रू हुआ तो रिटर्न डेटा. तो इस कंडीशन में बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोग का रिक्वेस्ट 200 मतलब सक्सेसफुल अगर नहीं हुआ तो कुछ देने का जरूरत नहीं है, अगर हुआ तो डेटा हम लोग को मिल जाए तो हम लोग को फेच कर देगा जेसन फॉर्मेट में, जैसे हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखे हुए हैं. ये दूसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्प्ले फोरकास्ट. display forecast data for in forecast winfo children widget dot destroy. तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि डिस्ट्रॉय का मतलब होगा कि मान लो कि हमने पहले एक लोकेशन का सर्च पहले करके रखा था, अब फिर से कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय विजेट्स मतलब उस लेवल में जितना डाटा होगा पहले उस सबको हटा देंगे, उसके बाद फिर से प्लस डाटा लोड करेंगे. तो विजेट डॉट डिस्ट्रॉय, उसके बाद forecast list equal to forecast data list. यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कितने दिन का डेटा चाहिए. तो हम लोग 4 दिन का बना रहे हैं, तो यहाँ पे होगा कोलोन 32. तो 32 मतलब 4 दिन में 4 दिन का डाटा 16 एंट्री टोटल. तो उसके बाद हम लोग करेंगे फॉर एंट्री forecast list time equal to
entry की text temp is equal to temp temp इक्वल टू जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया है केल्विन टू सेल्सियस, उसका हम लोग कॉल करेंगे सेल्सियस एंट्री main temp weather main equal to entry weather zero main weather description, and then text is equal to f time backslash n temp colon dot point one f degree C weatherman description slash weatherman description slash n. तो फॉर यहाँ तक जितना हमने किया, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने किया कि नया जो वहाँ पे कन्वर्ट जो फंक्शन यूज होके जो टेम्परेचर कन्वर्ट होके यहाँ पे आएगा वो सीधा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। एफ का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि एक एंकर टैग है, तो हम लोग को बार बार जाकर जहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बार यहाँ एक जगह पे डिफाइन कर देंगे, उसके बाद वो डाटा हर बार अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये काम हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोग करेंगे लेबल फोरकास्ट इनर फ्रेम टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट फॉन्ट Arial and the font will be 10 and उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट करेंगे जो पहले से है वही। एंकर is equal to W justify is equal to left and उसके बाद टैग एंकर इक्वल टू W और एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग पैडिंग देंगे। एक्स इज इक्वल टू 10 पैड वाई इज इक्वल टू 5। छोटा कर देते हैं। सो
तो यहाँ तक सबने लिख लिया है? किसी को कोई दिक्कत? Are you guys following up? हेलो भैया। हाँ, हेलो, तो फिर एक बार आप अगर कर पाए तो फर्स्ट से एक बार कोड दिखा दीजिए, बिकॉज मेरा शायद से कुछ लाइन मिस हो गया। एक बार स्क्रॉल करके दिखा दीजिए। हाँ, कितना तक? एकदम फर्स्ट से एक बार सिर्फ स्क्रॉल अच्छा करके धीरे धीरे करके दिखा अच्छा दीजिए अच्छा एक सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, थोड़ा अब नीचे लेके जाइए। The हाँ, size, हाँ, फिर नीचे थोड़ा एक बार। हाँ, तो अब थोड़ा नीचे और। हाँ, आप थोड़ा और नीचे लेके जाइए। हाँ, ये वाला पार्ट कंप्लीट था। ये वाला। हाँ, ठीक है, थोड़ा नीचे लेके जाइए। और नीचे, और नीचे। हाँ, एक से। हाँ, हो गया अब। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करंट वेदर का एक और फंक्शन लिखेंगे। तो बाकियों को क्या सब सब समझ आ रहा है? हेलो? कोई दिक्कत से किसी को और? कोई डाउट, कोई क्वेरी? इनको प्रॉब्लम है वो अपना डाउट लेकर मैसेज बॉक्स में टाइप करो प्लीज। आपने लिख लिया कोड? हाँ या ना, कुछ बोलो भाई। थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, लिखो। फिर हो जाने के बाद बता देना। ओके। बाकियों का भी एरर नहीं आ रहा है? सबका सबका सही चल रहा है?
और बाकी कोई डाउट? तो सबको सब समझ आ रहा है, तो फॉलो अप कर पा रहे हैं ना? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक लोकेशन वाला एक और फंक्शन, तो एक और फंक्शन बनाएंगे हम लोग गेट करंट वेदर के लिए। ओ सॉरी, गेट करंट वेदर लोकेशन। फिर यहाँ पे ये वाला यूआरएल फिर से कॉपी करेंगे, ये वाला। response request get URL, get data, response JSON। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देंगे कि if data COD not equal to 200, return none, else return data। सो अब तक हमने जो 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 फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें से एक है गेट फोरकास्ट वाला, जहाँ पे हम लोग ओवरऑल जितना भी डाटा हम लोग इस 4 दिन का होल डे फोरकास्ट में देंगे, वो वाला एक डाटा। गेट करंट वेदर जो हम लोग लेबल में अलग से लगाएंगे, वो वाला डाटा। वो ये दो डिफाइन किया है। फाइनली हम लोग का आता है कि ये सब करने के बाद क्या होगा, फाइनल होगा सर्च वाला फंक्शन डिफाइन करने का काम। city text dot get current equal to get current weather city और forecast equal to get forecast city and current and forecast MC is equal to Kelvin
Celsius, temp F equal to temp square C star 9 divided by 5 location location label current system current SYS dash country, then temp label text, then temperature temp underscore C point 2F ये हाँ F उसके बाद देन हम लोग डिफाइन करेंगे वेदर वाला वेदर लेवल टेक्स्ट F weather current weather 0 main then current weather zero description then humidity level
text. Similarly, F, humidity, current, main, humidity, ये तो इतना परसेंट, wind, wind level, text equal to F, wind speed, current, wind, speed, this MS, and then finally date time level, text, updated, date time dot now, str f time, day in D, B, Y. And finally, display forecast. And then output equal to current weather, current
forecast print JSON dumps else message box dot show error city not found. So in this function हमने जैसा किया कि एक करंट वेदर वाला एक हमने किया कि डिस्प्ले फोरकास्ट वाला पार्ट, एक गेट फोरकास्ट वाला पार्ट, करंट वेदर वाला एक पार्ट। तो जहाँ से हम लोग एपीआई से इन ये करंट वेदर और फोरकास्ट वाले पार्ट में हम लोग एपीआई से डाटा फेच कर रहे हैं, और इस सर्च वाले इस सर्च वाले फंक्शन में हम लोग दो चीज कर रहे हैं कि ये करंट और फोरकास्ट वाला फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। फिर इस सिटी वाले पार्ट में जिसमें हम लोग सर्च वो टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो सिटी का नाम लिखा है वो आएगा। उसके बाद इस फंक्शन में हम लोग हर एक चीज का डाटा यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। वेदर जैसे यहाँ पे लोकेशन वाले पार्ट में वो सिटी का नेम होगा, टेम्प में यहाँ पे सेल्सियस में कन्वर्ट होके यहाँ पे सेल्सियस में कन्वर्ट होके आ रहा है, फिर कन्वर्ट होके यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद वेदर वाले पार्ट में वेदर का कंडीशन क्या है, जैसे कि विंडी है, क्लाउडी है, मिस्टी है या फिर सनी है, वो वाला रेनी है, वो वाला पार्ट आएगा। फिर ह्यूमिडिटी में परसेंटेज ह्यूमिडिटी कहाँ से कितना ह्यूमिडिटी वो आएगा। फिर विंड लेवल वाला विंड स्पीड वाला कितना मीटर पर सेकंड का विंड स्पीड है वो आएगा। डेट टाइम में करंट डेट टाइम स्टैम्प के साथ आएगा पूरा। और आउटपुट में हम लोग ले रहे हैं करंट और फोरकास्ट में, और जेसन फॉर्मेट में ये पूरा इंफॉर्मेशन डंप किया जाएगा। और जो पहले आप लोगों ने देखा था कि गलत सिटी का नाम डालने पे जो मैसेज बॉक्स आ रहा है वो यहाँ पे इस एरर मैसेज बॉक्स की वजह से आ रहा है, जहाँ पे हम लोग डिफाइन किया एरर जो सिटी नेम हम लोग का सिटी नेम है सिटी नॉट फाउंड। तो इसके बाद हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सर्च वाला बटन आ गया है। और मान लीजिए कि कोलकाता हमने सर्च किया, और मिनट ये सब
सो अभी अगर हम इसको रन करें तो मान लीजिए कि हमने कोलकाता सर्च किया तो क्या सॉरी फॉर द कमोशन। सो अभी अगर हम इसको चला दें तो मान लीजिए कि जैसे हमने अभी इसको ऑन किया तो तो मान लीजिए कि अभी अगर हमने यहाँ पे कोलकाता सर्च किया तो यहाँ पे जितना भी डाटा आ रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो सर्च वाले पार्ट में जो हमने काम किया है, सिटी सेक्टर टेक्स्ट, यहाँ पे सिटी का नाम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर सेल्सियस में भी है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी है, वेदर कंडीशंस, वेदर लेवल में वेदर कंडीशन, करंट वेदर यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लाउड है, स्कैटर्ड क्लाउड है। फिर ह्यूमिडिटी वाले पार्ट में जैसे देख सकते हैं आप लोग कि 37% है, विंड स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड, अपडेटेड टाइम, डेट टाइम अपडेटेड नाउ, आज का जैसे 14 तारीख है तो 14 अप्रैल 2025, अभी 4:23। और ये वाला जो हल्का डार्क ब्लू वाला पार्ट है, ये उसको कहते हैं हम लोग कैनवस। कैनवस में जैसे पूरा 4 डे का 4 दिन का पूरा हिस्ट्री है यहाँ पे। और हमने जो इसको रन जो क्वेरी किया, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं, मान लीजिए कि हाँ, यहाँ पे दुर्गापुर सर्च करते हैं इस बार। दुर्गापुर जैसे सर्च किया तो यहाँ पे पूरा जेसन फॉर्मेट में, यहाँ पे पूरा जेसन फॉर्मेट में पूरा एपीआई से जितना भी डाटा हम लोगों ने फेच किया था, इतना सारा डाटा एक बार में आ गया, जिसमें से हम लोग अपना काम का डाटा डाटा ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे विंड स्पीड की यहाँ पे क्या है, क्लाउड कितना है, वेदर डिस्क्रिप्शन, आइकॉन, मेन एल्टीट्यूड वगैरह, यहाँ पे जैसे इतना सारा डेटा एक बार में एपीआई ने हम लोग को फेच करके दे दिया। एपीआई से हम लोग रिक्वेस्ट मारा तो ऐसे ही ये वाला पार्ट काम कर रहा है। और यहाँ पे भी ये कैनवास वाले पार्ट में भी जैसे ये कैनवास वाले पार्ट में भी जैसे पहले डेट टाइम आया, फिर पहले डेट आया, फिर टाइम आया, फिर टेम्परेचर आया, और फिर वेदर कंडीशन, रेन, रेन में भी लाइट रेन, या क्लाउड में ब्रोकन क्लाउड, ये वाला पार्ट जैसे कि तो, और विद डिस्प्ले फोरकास्ट वगैरह, ये सारा फंक्शन यहाँ पे सर्च वाले पार्ट में जैसे आ गया। तो इसी के साथ हम लोगों का डेवलपमेंट वेदर ऐप बन के रेडी है। तो अब आप बताइए कि आप में से किन 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 को हो गया है, और नहीं हुआ है तो क्या क्या एरर आ रहे हैं। ठीक है,
और बाकियों का? हाँ बताओ। हाँ भैया, वो जो आपका डेफ गेट फोरकास्ट वाला जो फंक्शन था, तो उसमें जो यूआरएल है वो कहाँ से लाया था, वो मैंने भूल गया कहाँ से लाया था। एक मिनट फिर से बोलो, आवाज कट रहा था तुम्हारा। हाँ, वो जो गेट फोरकास्ट वाला फंक्शन है उसमें हाँ वो हाँ। यूआरएल जो था वो कहाँ से आया था, वो एक बार बता वो दीजिए। यूआरएल वाला ये इसी साइट का ही है। मान लो कि वो जो यहाँ पे हम लोग ने किया था कि कहाँ गया, ये एच टी टी पी एपीआई ओपन हम्म। वेदर ये वाला साइट। अगर इतना तक ये क्वेश्चन मार्क के पहले तक भी अगर सर्च करते हैं, मान लो कि ये वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं और तो ये भी यहाँ, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ये वाला पार्ट। मान लो कि अच्छा अच्छा। एपीआई यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये वाला साइट दे दिया, लोकेशन लोकेशन वाला पार्ट और एपीआई यूजर वाला पार्ट। एपीआई की से यहाँ पे सीधा बैकएंड सर्वर से हम लोग रिक्वेस्ट मार रहे हैं, रिक्वेस्ट से यहाँ पे आ रहा है, फिर हम लोग चेक करके ले रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा, समझ गया। हम्म। और बाकियों का क्या क्या हुआ, हो गया है बनाना लिखना कोड? जिनका 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 हुआ एक बार अच्छा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, या फिर क्या प्रॉब्लम है वही बताओ। हेलो। आपका हो गया है ना? इन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, जरा आप ये बताओ काइंडली प्लीज, क्या क्या दिक्कत हो रहा है? एरर शो हो रहा है। हाँ, एरर शो हो रहा है develop.com। सुमन एक काम करो, तुम अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाओ एक बार। अमन, हो गया है सबका? माइक ऑन करो एक बार। अमन थोड़ा माइक माइक ऑन नहीं है शायद।
Aman, और अपना माइक ऑन करो। तो चैट बॉक्स में लिख दो। एक और बार दिखाओ तो और स्क्रीन शेयर करके सुन। थोड़ा एरर एक और बार दिखाओ। तुमने शायद एपीआई की में कोई गड़बड़ किया है। एपीआई की में कोई फॉल्ट होगा तुम्हारा। अभी जनरेट किया है क्या? डिफॉल्ट वाला सेटिंग में क्या किया है तुमने? ये डिफॉल्ट वाला ले लो, एक काम करो, डिफॉल्ट वाला ले लो। हाँ, वो वाला। हाँ, सेव करो पहले, सेव कंट्रोल एस। हाँ, अब चलाओ। कंट्रोल करने सेव करने के बाद। हाँ, ये क्या दिक्कत हो सकता है? हाँ, एक काम करो तुम, ये वाला एपीआई की एक बार डाल के देखो तो। मैं दे रहा हूँ। और तो फिर एक काम करो कि तुम्हारा यूआरएल ठीक लिखा है ना, ये वाला पार्ट में, ये यूआरएल वाला पार्ट, या फिर तुम्हारा कोई लाइन वगैरह आ रहा है कहीं पे, स्पेलिंग वगैरह ठीक है ना? यूआरएल ठीक लिखा है ना, यूआरएल वाला पार्ट? काम करो, ये वाला पार्ट एक बार ठीक से एक और बार पेस्ट करके देखो एक बार। अभी ठीक नहीं होगा। समझ।
दे ही देते हैं। एक काम करो, मैं तुमको पूरा कोड दे रहा हूँ मैसेज बॉक्स में, उसको ही कॉपी मार लो। यार, पूरा नहीं आता है क्या? मैसेज बॉक्स में पूरा नहीं आता है? वो बाद में क्लासरूम में मिल जाएगा तुमको दीप। फिलहाल तो एक काम करते हैं, एक एक करके दे देते हैं तुमको ये कोड का पार्ट, पार्ट बाय पार्ट। और बाकियों का क्या है? सबका रन हो रहा है सुमन को छोड़ के? एंटन, भैया लास्ट में मेरा भी एरर आ रहा है, वो str एट्रीब्यूट एरर ही बार बार आ रहा है। एक सेकंड, क्या? मेरा एरर आ रहा है, वो str एट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट एरर है, str की। तो रुकिए मैं एक सेकंड बोलता हूँ क्या एरर है। अह, एक मिनट हो गया। एक सेकंड भैया।
अच्छा वो वाला, वो टीके, शायद थोड़ा टीके इंटर को इंस्टॉल नहीं किया। एक काम करो, पिप कमांड लाइन खोलो, फिर पिप इंस्टॉल टीके करो, टीके। अच्छा भैया, टी के मतलब कैपिटल या स्मॉल? बिकॉज दोनों में ही दे रहा हो, वो दिखा रहा हो चुका है। हाँ, पिप इंस्टॉल दोनों में ही दिखा रहा हो चुका है, दिखा रहा है पिप इंस्टॉल टी हो के। चुका है। अच्छा, वो हाँ छोटा स्मॉल टीके, दोनों ही टीके स्मॉल होगा, मतलब या तो वो करो, नहीं हाँ। तो पाइथन, ये वाला कोड एक बार रन करके देखो। एक मिनट, इंस्टॉल टीके, ये वाला एक बार रन करके देखो, नहीं तो कमांड लाइन। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ दिखा रहा है भैया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इंस्टॉल हो चुका है सर। इंस्टॉल्ड तो है। एक, एक काम करो, मैं तुमको अपना इस प्रोजेक्ट का गिटहब रेपो का लिंक दे रहा हूँ, वहां से तुम कॉपी कर लो। अच्छा। सो इसी के साथ हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। जिसका कोड रन हुआ उसको उसका वेरी गुड, और जिसका नहीं हो रहा है उसका गिटहब मैसेज में गिटहब का लिंक दे दिया, वहां से अपना प्रोजेक्ट देख लीजिए। तो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू आवर होस्ट्स, एंड यू टेक ओवर। So I hope you enjoy the building the weather app in Python. This project help you in learn how to fetch real life data, design interactive interfaces, and see how coding can solve real world problems in a fun way. We are incredibly proud of the effort and enthusiasm you all showed throughout these 3 days. From learning the fundamentals to applying them in a complete mini project, you have come a long way in a short time. So thank you, team. If anyone has any doubts or questions, now is the perfect time to ask. Please don't hesitate. So with this, we officially conclude our 3-day Python bootcamp. We hope this experience has given you a solid understanding of Python programming. But before we say goodbye, we have got one more exciting thing to share. I would like to introduce you all to our annual mega event console. Over to my co-host Marin. Thank you, Priyaprata. Before we continue further, we kindly request everyone to stay with us until the end of the event. We have some exciting segments coming up you wouldn't want to miss. Now, Console is the flagship event of Code Vision, open to all students of all years. It celebrates both technical and creative excellence. Some events from Console 2024 include Algorithm Arena Coding Competition for First Year, Code Crush Solo Coding for All Years, Squash the Bug Debugging Challenge, War of UI UX Project Showcase, AptiQuest Aptitude Test, Pixel Story Cinematography, Battle of Kings Chess Tournament, Cube Clash Rubik's Cube Challenge, Lens Legacy Photography Contest, Call of Duty Online Gaming Competition, Brain Quest Riddle Solving, Sudoku Puzzle Competition,
inked elegance, calligraphy, meme madness, meme creation, tug of words war, group discussion, minute showdown, pitching contest, seminar, knowledge sharing session. Whether you're into coding, creativity, or strategic thinking, there's something for everyone. A big thank you to all the participants for making this bootcamp a resounding success. We are thrilled by your enthusiasm and hope to see you at same energy at console. Now, I would like to extend a warm welcome to some very important guests who have inspired us throughout the journey and brought this club into existence. First, let's welcome our esteemed teacher founder of Code Vision, Mr. Prasanjit Maji sir. Next, let's welcome our student founders, Adarsh Bhaiya and Rakesh Bhaiya. We have also some dedicated alumni members who have guided us through every phase of this journey. Let's give a warm welcome to all of our seniors who have always supported us behind the scenes. And now, the moment we have all been waiting for. We are thrilled to officially launch the website of our club, Code Vision. Now, we'd like to call Prasanjit Maji sir to officially launch the site.